Good morning, students. Today, in this session of the lecture, we are going to discuss about the chemical properties of the metals and non-metals. In the previous lecture, we discussed about that what are the metals, what are the non-metals. Then we discussed their physical properties. So let's begin with the chemical properties of the metals and non-metals. The first chemical property of the metals or non-metals, like when we are going to talk about them, say suppose your magnesium. In the very first unit, we look that magnesium, when it is going to burn in the oxygen, what happens to it? It just burns with a very dazzling sign, just producing a magnesium oxide, isn't it? Like the magnesium, अगर आप लोगों को याद हो, we have done in the laboratory also that when we just burn the magnesium, what happens? 2Mg plus O2, it gets converted into a magnesium oxide, isn't it? it this happens over here. Now, in a general reaction, we say reaction of metals with oxygen. Okay, now in this case, your metal gets combined with the oxygen, and on combining, it form a metal oxide. This is a general reaction for each and every metal. कोई भी metal oxygen के साथ react करेगा, it is going to form the metal oxide. Now, here's the few things which you need to keep in your mind. That is your lithium, potassium, and sodium. They are very reactive at room temperature. Okay, ये इतने ज़्यादा reactive हैं at the room temperature. Means like if I take the example of the sodium हम लोग lab में use करते हैं. I will show you also that sodium is such a reactive metal कि sodium को whenever we store, हम लोग इसको या तो किसी वैक्स की कोटिंग, पैराफिन वैक्स की कोटिंग में रखते हैं, या इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिप करके रखते हैं, और वी कीप इट इन द that kerosene के अंदर डिप करके रखते हैं. The reason being is what it is very much reactive. तो अब जो केरोसिन की कोटिंग हो गई, क्या आपने इसको सोडियम मेटल को केरोसिन में डिप कर दिया, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिप कर दिया, या पैराफिन वैक्स के अंदर कोटेड करके रखा, तो वो कोटिंग्स क्या करते हैं? दे डू नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस मेटल. एक लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर. ओके, तो जिसकी वजह से दे डू नॉट अलाउ द मेटल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. अगर सोडियम मेटल जो है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, इट रिएक्ट्स वेरी वेरी एक्सप्लोसिवली. एक सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हो कि अगर लाइक सोडियम मेटल जब हम यूज़ करते हैं, एक तो इसको हम बहुत प्रॉपरली रखते हैं, वेरी सेफली वी कीप इन द लेबोरेटरी. अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, से सपोज बाय मिस्टेक किसी से वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर पानी गिर जाता है, तो इट जस्ट गिव यू अ वेरी लार्ज, जो तुम लोगों के दिवाली बॉम्ब्स आते हैं ना, बड़े वाले जो आते हैं एटम बॉम्ब्स, और व्हाट यू पीपल से, just like that it gives the blast, more than that blast. Okay, so we keep they, it means they are very reactive metals. Now let's take the reaction, how it is going to react. Na plus O2, it gives you a 2Na2O, balancing the reaction. This is your sodium oxide. Potassium oxide. Okay, copper का अगर मैं example लूँ, your copper 2Cu plus O2 gives you copper oxide. Clear? Now it just combine, ये जो है it is a black oxide, your copper oxide. Another example, if we take a aluminum, बहुत simple reactions हैं, and Al2O3. Okay, this is the aluminum oxide. Now besides that, you can take the example of the zinc also, plus O2.
zinc oxide. Okay. Now these are the reactions in which we have told we are learning कि metal कोई भी metal like look I have taken the number of the metals over here, they just reacted with the oxygen and they form the metal oxide. Now in the unit 2 जब हम लोग acid base and salt we were reading, we have done कि जो metal oxides होते हैं वो basic भी हो सकते हैं और they can be acidic also, they can be amphoteric also. Now over here what we say कि जब भी ये जो आपके metal oxides हो गए they are going to react with the water. आपका कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे मेरा जो भी मेटल ऑक्साइड बना जिंक ऑक्साइड और या सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड कोई भी ऑक्साइड बना, ये कोई भी ऑक्साइड को व्हेन आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म द अल्कली. लाइक ओवर हियर यू जस्ट टेक द एग्जांपल कि आपका जो बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर basic in nature. Okay, but I gave you a reaction of the this zinc oxide. Okay, mostly जितने भी आपके metal oxides होंगे वो basic in the nature होंगे, but still there are the few metals like one of the example is the zinc oxide. zinc oxide जो है ये जो है it is the amphoteric oxide. ओके अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये हुआ दैट दे आर गोइंग टू बी द एसिडिक आल्सो एंड द बेसिक आल्सो. क्लियर in the nature. Another reaction is what that if second one, if you are going to take any of the oxides, say suppose मैंने Al2O3 लिया, okay, plus I just make it react with the HCl. So what is going to happen is from the AlCl3, AlCl3 क्या हो गया, salt हो गया, plus 3H2O. Now this Al2O3 क्या कर रही है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, Al2O3 2NaOH. It is the base. When it is reacting with the base, sodium, aluminum, it is forming a, this is the sodium aluminate. Okay, it is forming a sodium aluminate. Now look over here, your aluminum is react, it is going to be the amphoteric oxide. Amphoteric oxide क्यों होगा ये, क्योंकि aluminum is reacting with HCl to form the AlCl3. At the same time this aluminum oxide is reacting with the base also to form the salt. In both the cases water is going to form, लेकिन the salt has become different. Similarly, I told you the ZNO. ZNO को if we make react with the HCl, then it is going to form the ZnCl2 plus H2O. At the same time, if I make ZNO to react with the NaOH, it is going to form a, this is the sodium zincate plus H2. So अब what you need to remember कि जो metal oxides है they are in the basic in nature. जो basic in the nature होंगे they are going to react with the acid only to produce the salt and the water molecule. But the oxides which are going to be the amphoteric in the nature, they are going to react with the acid also and the base also. Got the point over here? Now coming further, अब ये जो metal oxides हैं they are insoluble in the water also. Metal oxides are insoluble in the water, but still we have the few metal oxides which get solubilized. जो metal oxides water के अंदर solubilize हो जाते हैं, okay, they form the corresponding metal hydroxide. For example, Na2O, ये metal oxide है, इसको if we are making to react with the water, making to react with the water means कि अगर ये water में solubilize हो रहा है
So it is going to form the NaOH. आप लैब में पढ़ते हो NaOH, isn't it? K2O. It is a metal oxide. It reacts with the water. It forms a KOH. Okay, get the point. मेटल हाइड्रोक्साइड, अगेन आई एम रिपीटिंग, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट अगर कोई रिएक्ट कर जाता है दे फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग योर मेटल हाइड्रोक्साइड. गेट द पॉइंट. नाउ अनदर बिसाइड दिस वी हैव अनदर थिंग कि हम ये कहते हैं कि लाइक आपका आयरन मेटल हो गया. आयरन मेटल जो है वो बर्न नहीं होता है इन द एयर. आयरन भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है. मैग्नीशियम को व्हेन वी बर्न तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बना दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इट बर्न विद अ डिजलिंग साउंड. बट व्हेन यू आर गोइंग टू हीट अ आयरन, उसके साथ ऐसा नहीं होता है. बट व्हेन यू आर हीटिंग इट स्ट्रांगली, तो क्या होता है दैट योर आयरन 3Fe plus 2O2 it gets converted into a Fe3O4, isn't it? इसमें कन्वर्ट हो जाता है. so these take place because of the oxide layers वहाँ पे जो बन जाती है, because of the different layers which are being formed over here. like iron के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है in the corrosion के brownish layer हो जाती है. similarly in the case of the copper we have read, similarly in the case of aluminum we have read कि इनके ऊपर there is the formation of the layer, ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से क्या होता है दैट उनका जो प्रोसेस हो गया फॉर द रिएक्शन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन को स्लो डाउन हो जाता है. लाइक इन द केस ऑफ द मैग्नीशियम हम लोगों ने पॉइंट में लिखा था एक्टिविटीज में व्हेन वी डिड कि आप उसको रब करके एंड देन यू बर्न इट, इजंट इट. अगर आप उसे रब नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन, जो उसके ऊपर व्हाइट पाउडरी कोटिंग है वो एज इट इज रहेगी एंड इट विल टेक द टाइम. प्लस जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं विद द वाटर विद द ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज दे आर द वेरी लेस रिएक्टिव मेटल. फॉर एग्जांपल कौन से हो गए, लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया. लाइक हम लोग जो है अपने डे टू डे में वी वियर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, प्लैटिनम इवन. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द एयर ऑन द वाटर. इवन कुछ ऐसे मेटल्स हैं कि इफ यू आर गोइंग टू टेक द कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे. कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि आपको रिएक्शन करने के लिए यू नीड टू हीट अप द वाटर, आपको वाटर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, हॉट वाटर लेना पड़ेगा. कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे. स्टीम गर्म पानी से भी ज़्यादा हीट देती है, दिस यू ऑल नो कि बर्न फ्रॉम अ स्टीम और बर्न फ्रॉम अ हॉट वाटर अगर हम कंपेयर करें तो स्टीम का बर्न जो है वो ज़्यादा सीरियस होगा, ज़्यादा सीवियर होगा, isn't it? So it depends on the reactivity of each and every metal. But like your gold, silver, platinum, these all metals ऐसे हैं that these all metals they do not have the reactivity with the water or the oxygen. Even if you are going to take the water in the form of the steam, they are not going to react. ये react ही नहीं करेंगे. They do not have the reactivity. Now let's look over here. The second property, that is, and these are properties need not to write. ये as it is आप लोगों की बुक में दी हुई है. Get the point? बुक के अंदर ही what you do, just mark them 1 and 2 करके. ओनली द रिएक्शंस जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रिएक्शंस बता रही हूँ या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, उन पॉइंट्स को या उन रिएक्शंस को पेंसिल से बुक के अंदर ही लिख लेना. ओके, बिकॉज दे आर एज इट इज सेम इन योर एनसीईआरटी बुक के अंदर. क्लियर? रिएक्शन विद वाटर. अब रिएक्शन विद वाटर के अंदर मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. एक आपकी पॉसिबिलिटी ये हो गई और एक आपका हो गया दिस रिएक्शन is going to form metal oxide. Metal oxide when reacted with the water it form the
metal hydroxide. Okay. Now, for example, your potassium 2H2O, it forms a 2KOH plus hydrogen plus lot of the heat energy is going to release. Similarly, in the case of the sodium also same. But let's take the example of the calcium Ca plus H2O. It is going to form a calcium hydroxide plus hydrogen. Now यहाँ पे we say, अगर तुम लोगों को याद हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर you are going to look in the laboratory also, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब ये रिएक्शन होती है, कैल्शियम की रिएक्शन, कैल्शियम starts floating on the surface. The reason being for that flotation is what, कि जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस जो भी फॉर्म हुई है, उसके बबल्स जो हैं they stick to the surface of the metal. जैसे आपका आपने कैल्शियम लिया, कैल्शियम के ऊपर what you have done, you have kept the water. So what happens कि जो भी उसके ऊपर बबल्स आएंगे हाइड्रोजन के, they stick on the surface of the calcium, because of which जो कैल्शियम है वो क्या हो जाता है, वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है. इवन योर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है it do not react with the cold water, ये cold water के साथ react नहीं करेगा. Now in the case of magnesium we are going to have the two reactions. Two reactions कैसे कि अगर आपने hot water लिया है, if you have taken the hot water, it will be the magnesium H2O, magnesium hydroxide is going to be the form plus hydrogen. Okay. The second is what, when it is going to react with the steam. ये reactions आप लोगों को याद रखनी है बस. Mg plus H2O in the form of the steam, it is going to form a magnesium oxide or a hydrogen. Okay. This is the important point. Next, अगर हम एल्युमिनियम का केस देखें, एल्युमिनियम जो है your Al plus 3H2O, Al2O3 plus 3H2, it is going to react with the water. But aluminum do not react with the water under ordinary conditions. यहाँ पे you need to apply a condition. Means आपको थोड़ा सा water जो है वो warm करना पड़ेगा in the case of the this aluminum. Aluminum हो गया, iron हो गया, zinc हो गया. The reason being is what, that why we require to warm the water या उसको एक special condition हम बोलेंगे, special condition देनी है. The reason being is what, because of the presence of the protective layer on them. इसके ऊपर layer coating हो जाती है. That's why we say that these are the metals which do not react under the ordinary condition. Ordinary condition क्या होती है कि you have taken the metal और जो भी आपके पास पानी अवेलेबल है आपने उसके ऊपर डाला, उसकी रिएक्शन हो गई. That means the ordinary condition. But if you are doing anything for the reaction to take place, that means that it is requiring the special condition. Got it? Now, besides this, that whenever the third property is metal plus acid, means what happens when the metal is going to react with the acid. Now, in this case, we say metal displaces hydrogen from dilute acid. Second, only less reactive metals do not displace hydrogen from dilute acid. For this, if you people remember that when we did that particular reaction, yes,
that displacement reaction जब हम लोगों ने किया था. In the case of the displacement reaction we did कुछ ज़्यादा reactivity series we did. In the reactivity series हम लोगों ने क्या कहा था कि which is going to be the more reactive they are going to displace, isn't it? So same reactivity series is applicable over here कि जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हो गए means they are going to be the less reactive like your gold, silver, platinum, they were the less reactive. So all the metals we say they displace the hydrogen from the dilute acid, but if there is any less reactive metal, they are not going to displace the hydrogen from the dilute acid. Now let's look its reactions now. कि कौन से reactions इसके हो गए. For example, we have the 2Na plus 2HCl. 2NaCl plus H2 gas. Mg plus 2HCl. MgCl2 plus H2 gas. 2Al plus 6HCl. AlCl3 plus H2. Okay. Similarly, Zn plus 2HCl. ZnCl2 plus H2 gas. Fe plus 2HCl. FeCl2 plus H2. Cu plus HCl. CuCl2 plus H2 gas. Okay. In all these reactions, if you are going to look, they are forming the chloride salt. Now, अगर आप सारा देखो, in the case of the aluminum, we are requiring so much of the HCl over here for the reaction to take place. The reason being over here is what again, that is again the presence of the protective layer. इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट का HCl we are required over here. Got it? This happens. मतलब like आयरन के ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर आती है. तुम लोग कहोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने 2 लिखा है आयरन के लिए, तो आपने 6 लिखा ही नहीं है. So I have just showed you that if there will be the presence of the oxide layer, आपकी मतलब there will be the presence of the layer, what is going to happen? The more amount of acid is going to be used. Getting the point? इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने यहाँ पे तो 6 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है. Now यहाँ पे एक question we have. ये question do in your note copy. How do metals displace hydrogen from dilute acid? What is the process? Write down its answer. All those metals which are more reactive than hydrogen displace hydrogen from the dilute acid to produce hydrogen gas. As more reactive metals can easily give electrons, and these electrons reduces hydrogen ions of acid to hydrogen gas. एक बार फिर से I am repeating the answer. All those metals which are more reactive than hydrogen displace hydrogen from dilute acid to produce hydrogen gas. As more reactive metal gives electron easily, and these electron reduces hydrogen ions of acid
produce hydrogen gas. Okay. Now the next comes here that like I have showed you the example of the HCl, but इसका मतलब ये नहीं है कि वो H2SO4 के साथ react नहीं करेगा, HNO3 के साथ react नहीं करेगा. They can react. If you look, हमने the reaction which we have done अभी, all the reaction we did with the HCl. जब आपने HCl के साथ reaction करी, तो they form the chloride salt. सभी chloride के products थे. Say suppose if we have taken a H2SO4. In the case of the H2SO4, it is going to form a sulfate salt. Okay, like Zn plus H2SO4, ZnSO4, H2, Fe plus H2SO4, FeSO4 plus H2. Got it? Similarly for the other metals also, you can just try out them. Clear? Now, the next thing is what? That when your metal is going to react with the dilute HNO3, H2 gas do not get released. Why? Because your HNO3 इसको point को सिर्फ याद रखना है तुम्हें. The reason being is what? Because your HNO3 is a strong oxidizing agent. Therefore, जो NO2 गैस है, that is your nitric oxide जो बनेगा वहाँ पे, nitric acid जो है, nitric acid will oxidize the hydrogen gas into the water molecule. Got it? Again I am repeating कि अगर कोई metal is going to react with the HNO3, then in that case hydrogen gas will not evolve. The reason being your nitric acid is a strong oxidizing agent. Due to being a strong oxidizing agent, it reduces the hydrogen gas into the water molecule. Clear? This I have told you a point according to the some MCQ type of the question में अगर पूछा जाए. Clear? Then your displacement reaction हम लोगों ने करा हुआ है. That is your the displacement reaction which is going to give जो ज़्यादा reactive metal होगा, it is going to displace the less reactive metal. Clear? The another one is your reactivity series. Reactivity series we have done. It is basically a arrangement of the metals in a vertical column in order of a decreasing reactivity. That is your potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, heat, hydrogen, copper, Hg, Ag, and Au. And it is a decreasing reactivity order. Okay. Now यहाँ पे एक question we have. How metal displace hydrogen from water. वहाँ पे we did acid and here we are doing the water. Write down its answer. Water is slightly ionized to give H plus ion and OH minus ion. When reactive metal combines with water, it gives electrons to reduce hydrogen ion of water to hydrogen atom, which form hydrogen gas. Again, I am repeating the answer. Water is slightly ionized to give H plus and OH minus ion. When reactive metal combines with water,
It gives electrons to reduce hydrogen ions of water to hydrogen atoms, which form hydrogen gas. Okay? अब यहाँ पे we have already discussed कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं they are going to be the more reactive than the hydrogen, means they are going to displace the hydrogen, and नीचे वाले they are going to be the less reactive than the hydrogen, therefore they are not going to displace the hydrogen in the according to the reactivity series. With this we finish our reactions of the or the chemical properties of the metal. Okay, now for today I have done only the reaction with the metals, or you can say the chemical properties of the metals. दो questions मैंने दिए, answers I have told you. Only that two questions you need to write in your note copies. Rest जो extra reactions I have shown you वो अपनी book में ही लिख लेना. Now your homework is what? Only the reaction of metals मैंने जहाँ तक पढ़ाए हैं, means up to the page number 45 of this unit. फिर reaction of the metal and non-metal नहीं करना है आपको. उससे पहले का जो part है page number 45 तक, you need to read from your NCERT. Just that much you need to read. Okay? On that basis, you are having the in-text question. पहले chapter read करना up to the page number 45 जितना हमने पढ़ा है. Okay, I just tell you the pages also. From the page number 41 से 45 तक you have to read. Okay, then page number 46 पे we have the in-text question, related in-text question. Do it in the book only. उसको book में ही solve करने की try करना है. The two questions which I have discussed you need to write in your notebook. Got the point? Besides that, from your LR, only the chemical properties part of the metals which I have discussed, जितना मैंने discuss किया है, सिर्फ उतना ही part read from the LR. I am repeating again कि metal and non-metal की reaction अभी आप लोगों को नहीं पढ़नी है. That we will be doing in a detail in the next lecture. Is it clear to all of you? So this much you need to do as your